Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we are going to discuss about discrete time Fourier transform. This is lecture 26 of our signal and system course. In your book which we are following, which is Signal and System by Oppenheim, one complete chapter, which is chapter 5, is dedicated for the discussion of this discrete time Fourier transform. However, there are many similarities between continuous time Fourier transform, which we have already discussed in detail, and the discrete time Fourier transform. So due to those similarities, we are not going to pay much attention to discrete time Fourier transform because it is exactly same in many ways to the continuous time Fourier transform. However, there are a few differences, and in today's lecture we will only talk about those differences in which the discrete time Fourier transform has some difference as compared to the continuous time Fourier transform. We will also discuss in today's lecture about a few properties of discrete time Fourier transform. Again, as I have already said, that many of those properties look exactly similar to the continuous time Fourier transform case, but in some properties there is a bit of difference, और वो difference जो है उसको हम फिर उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन चूँकि ज़्यादातर अगेन जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि ये केस जो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से बहुत ज़्यादा इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, सो हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको ज़्यादा डिटेल से स्टडी करने में, तो जो आपकी बुक है उसमें जो चैप्टर 5 है, that is dedicated to this discrete time Fourier transform, so there you can read it डिटेल इसकी जो है वो आप तब इसको इन टॉपिक्स की जो डिटेल है वो वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको उसका आइडिया जो है वो हो जाएगा. So let's start today's lecture. First of all, we will directly write the equations for discrete time Fourier transform, and they look exactly similar to the continuous time Fourier transform case. So discrete time Fourier transform is defined like this: x of e j omega is x of n e raised to power minus j omega n, and this summation is from n minus infinity to plus infinity. If we compare this case with the continuous time case, for continuous time case there was an integral over here which was from minus infinity to plus infinity. Rest was x of t e raised to power minus j omega t. Since this is the discrete case, so we have x of n, and because this is discrete, so instead of integral we have a summation which runs from minus infinity to plus infinity. Rest everything is same. So this is the first equation which we call the analysis equation, or this equation provides us a way to calculate the discrete Fourier transform of a signal x of n. If we are given a signal x of n, how we can calculate its discrete Fourier transform, discrete time Fourier transform? We can use this equation, and from this equation we can calculate its discrete time Fourier transform. The inverse discrete time Fourier transform means if you are given x of e j omega and you want to find x of n from that, so this is known as inverse discrete time Fourier transform, which means to finding the signal x of n if you are given x of e j omega. So we will use this formula. So 1 over 2 pi omega runs from minus pi to pi x e j omega e raised to power j omega n d omega. So this is called the synthesis equation, in which we find x of n given that x of e j omega. सो यहाँ पे अगर आप इस केस को भी कंटिन्यूस टाइम केस से कंपेयर करें, तो कंटिन्यूस टाइम केस में here we were having limits from minus infinity to plus infinity. X of
j omega e raised to power j omega t, uh, and we were going to different the integral was on the frequency d omega. So यहाँ पे हम instead of minus infinity to plus infinity जो limits use कर रहे हैं वो minus pi से pi हैं, and I hope you already know the reason, the justification for this, because discrete signals are only distinct in an interval of 2 pi. So 2 pi के बाद whatever you have, they are all repetitions which have already occurred in an interval of 2 pi. So इस वजह से ये इंटीग्रल जो है ये माइनस पाई से पाई तक है instead of minus infinity to infinity. So that is a difference between the discrete time Fourier transform and continuous time Fourier transform. At least the difference in definition कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 पाई के एक इंटरवल में इंटरेस्टेड हैं, because everything beyond this interval of 2 pi is going to repeat and that have already occurred somewhere in that interval of 2 pi. So this x of e j omega, just like the continuous case, is called the spectrum of x of n, and this x of e j omega is normally complex, which means we have a magnitude response and a phase response of this. So magnitude or amplitude spectrum is denoted by x of e j omega magnitude, and phase spectrum is basically, you know how to find the magnitude and phase. We have already discussed that कि अगर आपके पास कोई भी complex quantity है तो it has magnitude जो है वो आप उसका फाइंड कर सकते हैं by taking real square plus imaginary square under root, and phase भी कैलकुलेट कर सकते हैं, that is tangent inverse of imaginary part over real part. Okay, so there are two major differences between continuous time Fourier transform and discrete time Fourier transform. The first difference is periodicity of the discrete time Fourier transform x of e j omega. So x of e j omega, the discrete Fourier transform हम यहाँ पे find करेंगे, that would be periodic. Periodic means that would repeat itself after 2 pi, और इसी वजह से हम इस केस में जब inverse calculate करते हैं, which means given x of e j omega, when we find x of n, so we only take interval of integration from minus pi to pi. ठीक है, so that is sufficient to describe the spectrum, because after an interval of 2 pi everything is a repetition which has already been occurred. So in some texts x of e j omega is denoted as x of omega or x of e j omega. All of them means the same thing. ठीक है, सिर्फ ये नोटेशन का डिफरेंस है. सो बाज़ बुक्स में आपको ये x of omega या x of e j और कैपिटल ओमेगा भी मिलेगा. सो ऑल ऑफ देम आर द वन एंड द सेम थिंग, एंड दे आर द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x of n. Okay, so since we have described that the discrete signals are only, for discrete signal an interval of 2 pi is only considered or important, so it means all the frequencies must be present in an interval of 2 pi. So let's suppose we have a signal something like this. So this is a discrete signal, and from here you can see this signal is a slow varying signal, which means कि इसकी जो values हैं, मसलन for example यहाँ से slowly जो है ये signal, इसकी value it attains the maximum value and then slowly it decreases. So इस तरह का अगर आपके पास signal है which is a slow varying signal, so ऐसे signals जो हैं इनका अगर हम Fourier transform लेंगे तो इनका Fourier transform जो होगा that will be centered at frequencies near even multiples of pi. For example, minus 2 pi, plus 2 pi, minus 4 pi, plus 4 pi. So slow varying signals, discrete signals, their frequency content is centered around even multiples of pi. And if we take
in contrast, if we take this signal which is a fast varying signal, so इसमें आप देख सकते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो सडनली चेंज हो रही हैं. ये नेगेटिव वैल्यू है जो है उससे नेक्स्ट इंस्टेंट पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पे नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सो दिस इज़ अ फास्ट वेरिइंग सिग्नल. सो अगर हम इस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, सो इट्स फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स जो हैं दे आर सेंटर्ड अराउंड आर मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी पाई पे या 3 पाई पे या 5 पाई पे. सो पाई इज बेसिकली the frequencies in the vicinity of pi or odd multiple of pi are considered as high frequencies, and the frequencies which are near even multiples of pi like 0 or 2 pi or 4 pi, they are considered as low frequencies. So ये distinction जो है ये बहुत important है कि जब हम फॉर एग्जांपल इस कोर्स में तो शायद नहीं, नेक्स्ट कोर्स में आप डिस्क्रीट फिल्टर्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे डीएसपी के कोर्स में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा फिल्टर विच पासेस द फ्रीक्वेंसीज अराउंड पाई, that type of filter is called a high pass filter because those are high frequencies which are centered around pi or r multiples of pi. Similarly, any such structure which passes the zero frequencies or the frequencies near to pi, that type of filter is called low pass filter because that is only passing low frequencies, and low frequencies are centered at around even multiples of pi. So this distinction is important. So if a signal is fast varying, if it is changing its values very fastly from one value to another, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हो रहा है, तो इसका this is called a high frequency signal. And if we take the Fourier transform of that, then the Fourier transform will be centered near the odd multiples of pi. Similarly, if we have a slow varying signal like this, then the Fourier if we take the Fourier transform of this, its frequency content will be around even multiples of pi. Okay, so now let's take some examples of discrete time Fourier transform. The first example is an example of an impulse function. An impulse function, you know, in discrete time, it is very easy to define impulse function. For continuous time, to define impulse function is a bit tricky because for continuous signal, we can't say that continuous signal are one at a single point, but for discrete signal there is no such problem. So if x of n is a discrete impulse function delta of n, so ये delta of n जो है सिर्फ n is equals to 0 पे 1 होगा, बाकी तमाम n की वैल्यूज़ के लिए चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, तो उनके लिए ये जो discrete impulse function है that would be equals to 0. So अगर discrete impulse function का हम Fourier transform कैलकुलेट करना चाहते हैं, we will put this definition into this equation, जो कि आपकी इक्वेशन जो यूज़ होती है Fourier transform कैलकुलेट करने के लिए. So instead of x of n we put delta of n because now x of n is equals to delta of n. So delta of n e raised to power minus j omega n, and this case is exactly similar to the continuous impulse function. Continuous impulse function का भी हमने इसी तरह से Fourier transform लिया था, and that Fourier transform was 1 for all frequencies, and same is the case over here. This Fourier transform for discrete impulse function is also 1. So basically we can say that it is independent of the frequencies, या ये कह सकते हैं कि it exists for all frequencies from minus infinity to plus infinity, and its value is 1. Similarly, if we take the discrete time Fourier transform of a shifted impulse function, we will soon discuss this property, लेकिन ये property already भी आपको known होगी क्योंकि continuous time Fourier series में हम Fourier transform में ये property पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे भी ऐसी था कि डेल्टा टी जो था इट्स Fourier transform was 1. So डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट का जो Fourier transform था that was e raised to power minus j omega t naught, and same is the case over here. Shifted impulse discrete impulse function
डेल्टा ऑफ n माइनस एन नॉट। सो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट। सो उसी अमाउंट से, जिस अमाउंट से आप इम्पल्स फंक्शन को शिफ्ट करते हैं, उस अमाउंट से आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है बेसिकली ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एंड दैट अमाउंट जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मसलन एन नॉट अगर 3 है तो डेल्टा ऑफ n माइनस 3 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 3। और ये हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में ये बात कर चुके हैं कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आ रहा है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस लेंगे तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट इज 1 एंड इफ यू टेक द फेज रिस्पांस, the phase response will linearly vary with frequency. So shifting an impulse function, no matter whether it is continuous or discrete, it only brings a change in the phase response of that Fourier transform. It does not change the magnitude response, but it only changes the phase response of that thing. So अगर आपके पास for example डेल्टा ऑफ n माइनस एन नॉट है तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस होगा दैट विल बी 1 एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। हाउएवर इट विल introduce a phase response which will basically will translate to some sort of delay. Okay, now let's take Fourier transform of a few more signals just for some examples. So we have a signal x of n is alpha raised to power n u of n where alpha is less than 1. First of all, this type of signal, since it is being multiplied with u of n which is unit step function, so it only exists for those values of n which are greater than equals to 0. So ये 0 से पहले ये exist नहीं करता x of n, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ये सिग्नल 0 है और 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है और 0 से इन्फिनिटी तक दिस इज अल्फा रेज टू पावर n. सो अगर हम n को 0 पुट करें तो 0 पे दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज अल्फा रेज टू पावर 0 इज 1. 1 पे दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा, बट सिंस अल्फा इज लेस देन 1 सो 1 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 वाली वैल्यू से लेस होगी. सिमिलरली 2 पे इट इज अल्फा स्क्वायर, चूंकि अल्फा लेस देन 1 है तो अल्फा स्क्वायर विल बी लेस देन अल्फा. सो 2 पे इसकी वैल्यू 1 से भी लेस होगी. सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज सिग्नल इज अ डीकेइंग एक्सपोनेंशियल. जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं ये सिग्नल जो है ये डीके होता जा रहा है. सो 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है बट इट इज़ अ डीकेइंग एक्सपोनेंशियल, क्योंकि आपके पास ये जो वैल्यू 0 पे है 1 पे वैल्यू उससे कम है, 2 पे वैल्यू उससे कम है, 3 पे वैल्यू उससे कम है एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दिस इज अ डीकेइंग एक्सपोनेंशियल. वी वांट टू टेक द Fourier transform of this signal. So we will put this into the equation जो है वो आपके पास ये समेशन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थी, बट सिंस बिकॉज ऑफ u of n दिस सिग्नल ओनली एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to infinity, सो इस वजह से ये अल्फा ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा होल रेज टू पावर n and this the sum of this can be calculated with the help of geometric series 1 upon 1 minus r. ठीक है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है वो आपके पास फार्मूला ये होता है 1 upon 1 minus r where this is your r alpha e raised to power minus j omega. So x of e j omega will be 1 upon 1 minus alpha e raised to power minus j omega. If you take the magnitude of this thing x of e j omega का magnitude लेंगे तो this magnitude will be equals to this 1 upon 1 plus alpha square minus 2 alpha cosine omega. आप इसी को कैलकुलेट कर सकते हैं. e raised to power minus j omega can be written as कोसाइन ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं. एंड सिमिलरली फेज अगर आप इसका कैलकुलेट करें दैट इज इमेजिनरी पार्ट over real part, tangent inverse of imaginary part over real part. So this will be minus tangent inverse of alpha sine omega over 1 minus alpha cosine of omega. So now if we plot this magnitude response and phase response for different values of omega, so you will get the magnitude response curve something like this and the phase response is
समथिंग लाइक दिस। सो ये इन्हीं को, इन दो फंक्शंस को, मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस को यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। सो ये जो एक चीज़ विच यू मे नोट के अगर से आपका जो सिग्नल था एक्स ऑफ एन दैट वाज ओनली नॉन ज़ीरो फॉर values of n which are greater than equals to 0, say still जो इसका magnitude response है that exists from minus infinity to plus infinity, and similarly phase response exists from minus infinity to plus infinity. So let's now take another example, and this time we are not multiplying it with u of n. So it means कि basically आपके पास जो x of n है that exists both for negative n and for positive n, but you can see that this x of n, just like the previous x of n, is also a decaying signal on both sides of n. नेगेटिव n के लिए भी decaying signal है और पॉजिटिव n के लिए भी decaying signal है. सो इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से फार्मूला में पुट करके, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. जो x ऑफ ई जो ओमेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कोसाइन ऑफ ओमेगा, ठीक है. सो इस केस में हमारे पास जो है वो ये जो सिग्नल है, इस केस में आपके पास जो एक्स ऑफ ई जी ओमेगा आ रहा है दैट डज नॉट हैव एनी इमेजिनरी पार्ट. सो इस वजह से इसका जो फेज रिस्पांस है वी कैन से दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड फॉर if we put the magnitude response, so its magnitude response for different frequencies is something like this, ठीक है. सो एक चीज़ जो आपके पास हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, और वो ये थी कि आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है डिस्क्रीट सिग्नल के लिए वो 2 पाई की रेंज में पीरियाडिक होता है, यानी वो रिपीट करता है आफ्टर एवरी 2 पाई. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारी रेपिटेशंस हैं. सो द ओनली फ्रीक्वेंसीज विच आर इम्पॉर्टेंट इज any interval of length 2 pi. So you can take it from minus pi to pi or from 0 to 2 pi, because after that there would be only repetitions. Okay, so now another, as a last example, we take the discrete time Fourier transform of a rectangular pulse signal. So this is a rectangular pulse signal. You can say it exists from some minus n1 to plus n1. सो ये n1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है. सो जैसे जो जहाँ पे हमने एग्जांपल ली है उसमें वी हैव टेकन दिस वैल्यू फ्रॉम -2 टू +2. सो देयर आर फॉर एग्जांपल 5 नॉन ज़ीरो वैल्यूज एट -2, -1, 0, 1 एंड 2. सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम कैलकुलेट करें दैट वुड बी sin 5 ओमेगा ओवर 2 ओवर sin ओमेगा ओवर 2. यू कैन कैलकुलेट इट बाय पुटिंग इट इन द सेम इक्वेशन. जनरली अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है जो किसी n1 -n1 से लेके प्लस n1 तक एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. साइन ओमेगा n प्लस 1 ओवर 2, यहाँ पे हमारे पास n1 जो था दैट वाज 2, सो 2 प्लस 1 ओवर 2 इज साइन 5 ओमेगा ओवर 2 एंड डिवाइड बाय साइन ओमेगा ओवर 2. सो इफ वी प्लॉट दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म, सो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो इस रेक्टेंगुलर पल्स का है दैट लुक्स लाइक अ सिंक फंक्शन. यू रिमेंबर सिंक फंक्शन, इस तरह के आपके पास सिंक फंक्शन है. एंड अगेन यू कैन verify that this is repeating itself after every interval of length 2 pi. So Fourier transform for discrete signal is periodic और 2 pi के बाद वो अपने आप को repeat करता है. Okay, so just like the case of continuous time, discrete time के केस में भी जो है वो हम frequency response define कर सकते हैं. frequency response जो रिमेंबर हमने continuous time केस के लिए भी define किया था, और अगर आपको याद है तो वहाँ पे हमने जो डिफाइन किया था h of s, उसको कहा था that was h of t e raised to power minus j omega t and integral from minus infinity to plus infinity. So similarly you can define here the frequency response as h of omega, and this is h of n e raised to power minus j omega n, and instead of integral we have a summation from minus infinity to plus infinity. So this is basically the frequency response
are generally speaking, not frequency response, generally speaking, this is the Fourier transform of h of n, इम्पल्स रिस्पांस का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है जिसको हम सिस्टम फंक्शन भी कह सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू रिकवर इम्पल्स रिस्पांस from this h of omega, you can use this inverse discrete time Fourier transform equation 1 upon 2 pi h of omega e raised to power j omega n, and you can integrate it from minus pi to pi in an interval of length 2 pi. Any interval of length 2 pi पे आप integrate कर सकते हैं and you can recover this impulse response from there. Okay, now discrete Fourier transform for periodic signal. Fourier transform for periodic signal, ये भी हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम का केस कि आप जो है नॉर्मली तो हम पीरियाडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज़ जो है वो फाइंड करते हैं, बट इफ़ यू नीड अ यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी एक ही टूल को आप यूज़ करना चाहते हैं बोथ फॉर पीरियाडिक सिग्नल एंड ए पीरियाडिक सिग्नल, तो यू कैन यूज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियाडिक सिग्नल. इसी तरह से इस केस में भी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में भी पीरियाडिक सिग्नल के लिए भी आप उसी तरह से जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से कंटिन्यूस के केस में हमने किया था. सो अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट एन, तो इसका जो ये पीरियाडिक सिग्नल है, ठीक है, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट एन इज कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल एंड इट इज़ पीरियाडिक विद ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन. सो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई एल. देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस ओवर हेयर. जो कंटिन्यूस टाइम का केस था वहाँ पे हमारे पास था 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये वाली टर्म नहीं थी 2 पाई एल. ये वाली टर्म क्यों है इसमें? ये वाली टर्म इस वजह से है कि डिस्क्रीट का केस में हर 2 पाई के बाद जो है इसकी रेपिटेशन होती है जो कि कंटिन्यूस में नहीं होती थी. ठीक है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है कि आपके पास ये जो e raised to power j omega naught n है which is periodic with fundamental period omega naught, ये शिफ्ट हो जाएगा at omega is equals to omega naught जब आप इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे. लेकिन ये 2 पाई l जो है ये एडिशनल टर्म आपको ये बता रही है कि चूँकि ये डिस्क्रीट का केस है, सो डिस्क्रीट के केस में दिस विल बी पीरियाडिक विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज पीरियाडिक विद 2 पाई. सो 2 पाई 4 पाई और मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई पे ये अपने आप को रिपीट करेगा. सो दिस इज़ अगेन द सेम थिंग. सो यहाँ पे आप ये जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ फॉर एग्जांपल ओमेगा नॉट, तो ये ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई ओमेगा नॉट प्लस 4 पाई, सिमिलरली ओमेगा नॉट माइनस 2 पाई ओमेगा नॉट माइनस 4 पाई, ये सारी अक्रेंसेस जो हैं इसकी मौजूद हैं और ये अक्रेंसेस इस वजह से हैं कि ये आपके पास 2 पाई से पीरियाडिक है. ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सिग्नल की कोसाइन ओमेगा नॉट एन एंड वेयर वी हैव डिफाइन ओमेगा नॉट इज 2 पाई ओवर 5. सो आप यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं. सो दिस विल बी वही इक्वेशन है, ये पाई डेल्टा ओमेगा माइनस 2 पाई ओवर 5 प्लस पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 2 पाई ओवर 5. सो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट और फिर इसी तरह से जो है वो ओमेगा नॉट प्लस माइनस 2 पाई ओवर 5 और ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई ओवर 5 पे अपने आप को इस तरह से रिपीट. Okay, now let's talk about a few properties of discrete time Fourier transform. Discrete time Fourier transform की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी ही हैं जैसे कंटिन्यूस टाइम Fourier transform की हैं. सिर्फ एक डिस्टिंक्शन जो हम पहले उसका जिक्र करना चाहते हैं कि ये जो आपके पास x of e j omega है which is the Fourier transform of x of n, this is periodic with 2 pi. So this periodicity with an interval of length 2 pi, that is important and that will change some properties in this description of some properties in this case. But for the first property which we are going to discuss is exactly similar as with the continuous time Fourier transform case, and this is called linearity. So if I have two signal x1 of n and x2 of n and I take a linear combination of them like ax1 plus bx2,
their Fourier transform will also be linearly combined in the same fashion. So their Fourier transform will be ax1 of ej omega plus bx2 of ej omega. So this property is linearity, and this is exactly similar as is the case of continuous time Fourier transform. Similarly, the next property is called time shifting, where we shift a signal in the time domain. So if x of n has a Fourier transform x of ej omega, then x of n minus n naught, which is a shifted version of x of n, will have a Fourier transform which is e raised to power minus j omega n naught x of ej omega. So same x of ej omega, but it will be multiplied with e raised to power minus j omega n naught when we shift the signal x of n from x of n to x of n minus n naught. One thing which we have also noted in case of continuous time Fourier transform, that the magnitude of these two are exactly similar. ये x of e j omega की जो magnitude है वही magnitude इसका भी है, because e raised to power minus j omega n naught magnitude is 1. Only there is a phase difference between this thing, and that phase difference has occurred because of delaying this signal in the time domain. Okay, so this is the conjugation and conjugate symmetry. This is also almost similar, just like the case of continuous time Fourier transform. So if x of n has a Fourier transform x of e j omega, then x star of n, which is the complex conjugate of this x of n, has a Fourier transform x star e raised to power minus j omega. And if x of n is real, which means x of n is same as x star of n, then x of e j omega will be same as x star of e raised to power minus j omega. So अगर आपके पास सिग्नल रियल है, रियल सिग्नल रियल क्या होता है, कोई भी नंबर रियल है, अगर उसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है दैट इज इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ, तो उस केस में ये आपके पास जो x of e j omega होगा और x star e minus j omega, they will also be equal because signal is real. So this is also exactly similar as was the case of continuous time Fourier transform. Now one thing over here which is a little bit different, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की. सो यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन जो है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस, एंड इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड accumulation ऑफ सिग्नल. सो इफ़ x of n हैज़ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म x of e j omega, देन x of n माइनस x of n माइनस 1. ठीक है, सो x of n में से अगर हम x of n माइनस 1 सिग्नल को माइनस करें, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ देम, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी 1 माइनस e raised to power minus j omega x of e j omega, and here we have used the linearity and time shifting property. x of n minus 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज e raised to power minus j omega x j omega. ठीक है, और अगर हम इन सिग्नल को कंबाइन कर रहे हैं लाइक ax1 plus bxn minus 1, where instead of b the value of b which we have chosen is minus 1 and value of a which we have chosen is 1, so it has become x of n minus xn minus 1. so ये 1 minus e raised to power minus j omega से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म x of e j omega था xn का. so जो आपके पास अगर आपको याद हो तो जो हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कंटिन्यूस टाइम के केस में डिस्कस की थी, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा, यानी वो फोरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो डिस्क्रीट के केस में वो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स ऑफ जे ओमेगा व्हेन यू टेक दिस देयर डिफरेंस. ठीक है, सो जिस तरह से वहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय
कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होंगे दे विल बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन। दिस इज वन सच डिफरेंस इक्वेशन, और इस डिफरेंस इक्वेशन में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा, या यू कैन से एक्स जे ओमेगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। सिमिलरली जो इंटीग्रेशन है उसके केस में भी जो है वो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन में, जैसे जे ओमेगा से वहाँ पे कंटिन्यूस टाइम के केस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो जो है इंटीग्रेशन में जे ओमेगा से डिवीजन होती है। यहाँ पे भी ऐसी है कि जे ओमेगा से जे डिवीजन होगी एक्स ऑफ ई जे ओमेगा की, प्लस देयर वुड बी वन एडिशनल टर्म, और वो एडिशनल टर्म जो है वो इस जिस तरह इंटीग्रल में वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिमिलरली दिस एडिशनल टर्म here will result from this summation। और इसकी एग्जांपल जो है इसमें जो ये कहा जाता है सिस्टम जो बेसिकली तमाम वैल्यूज़ को सम कर रहा होता है, इंटीग्रेशन भी एक सम ही है जो आप किसी माइनस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट टी तक ले रहे हैं। सो यहाँ पे जो उसका नाम है दैट इज़ कॉल्ड अकमुलेशन या अकमुलेटर। मसलन ये अगर आप इसकी इक्वेशन देखें, y ऑफ n इज़ m गोज़ फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ n। माइनस इन्फिनिटी से लेके n तक ये x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ को इकट्ठा कर रहा है, अकमुलेट कर रहा है, उन सब वैल्यूज़ को सम कर रहा है। एंड दिस इज़ प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये अगर इंटीग्रेशन होती तो ये माइनस इन्फिनिटी से टी तक एक्स ऑफ टी की वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। सो सेम इज़ ओवर हेयर विद जस्ट इंटीग्रल रिप्लेस्ड बाय दिस समेशन। अगर इसको मैं ये y ऑफ n है, अगर मैं y ऑफ n माइनस वन लिखूँ तो y ऑफ n माइनस वन होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके n माइनस वन तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके n माइनस वन तक मैं सम करूँ तो दैट विल बी y ऑफ n माइनस वन। अगर मैं y ऑफ n में से y ऑफ n माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आई विल गेट दिस जस्ट x ऑफ n। ठीक है, सो दिस द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n इज रिलेटेड टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n बाय डिवीजन बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में ये 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई होता है, इसके अंदर जो समेशन अकमुलेशन है इसके अंदर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा से ये एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस देयर इज़ वन एडिशनल टर्म, और ये एडिशनल टर्म जो है ये उसी तरह से है जिस तरह से आपके पास कंटिन्यूस के केस में आती थी। वहाँ पे हम इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे दिस विल रिजल्ट फ्रॉम दिस समेशन, जो आप समेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो एक डीसी टर्म आती है वो उस डीसी टर्म की वजह से ये एडिशनल टर्म होती है। सो ये प्रॉपर्टी जो है डिस्क्रीट टाइम के केस में दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड एक्मुलेशन, और ये एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह से आपके पास कंटिन्यूस टाइम का केस है। वहाँ पे जे ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन होती है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, और जे ओमेगा से डिवीजन होती है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन विद ओनली एन एडिशनल टर्म। और यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि इंस्टेड ऑफ जे ओमेगा हियर वी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा व्हेन देयर इज डिफरेंशिएशन, एंड वी डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा व्हेन देयर इज accumulation and there is just one additional term. So this was today's lecture in which we have discussed a little bit about discrete time Fourier transform और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में ये कहा था कि ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का केस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म केस। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डिस्क्रीट आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज़ ऑलवेज पीरियाडिक विद पीरियड 2 पाई, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई। सो इसकी वजह से कुछ चंद एक जो डिफरेंसेस आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं जो कि आपके पास कंटिन्यूस टाइम के केस में हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या इसको आप फर्दर क्लैरिफाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपकी जो बुक है ओपनहाइम की सिग्नल सिस्टम, उसका चैप्टर 5 जो है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए डेडिकेटेड है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।